Hello students. So as you know, we are revising poem Rain on the Roof by Coates Kinney. So we have studied how the sound of rain reminded poet thousands of memories of his earlier years. Okay, now starting with the our next stanza. Uh, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start. So every tinkle on the shingles. Here, what is the meaning of tinkle? Tinkle means ringing sound. What is the meaning of shingles? Rectangular tiles used on the sloping roofs. Okay, now has an echo. What is the meaning of echo? Echo means resound. ओके जो साउंड दोबारा से वापस सुनाई देती है दैट इज इको गूंज. सो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट. कि जब हर बूंद रूफ पे गिरती है तो एक टिंकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. जब शिंगल्स पे टाइल्स पे रेन की ड्रॉप्स फॉल करती हैं इट्स इको कैन बी कुड बी हर्ड इन पोएट्स हार्ट. मीनिंग्स दैट साउंड evokes feelings in the heart of the poet. Okay, in other words, the sound of the rain affects the poet deeply, and a thousand dreamy fancies into busy being start. Dreamy fancies means many memories, many imaginations, beautiful imaginations. And what is the meaning of busy being? Busy being means mind. Okay, so after listening to that sound, many beautiful imaginations come started into his mind, and a thousand recollections weave their air threads into woof. What is the meaning of recollections? Recollections means memories. Okay, what is the meaning of woof? A set of yarns. जब थ्रेड्स को आपस में इंटरवीव करके जो सेट ऑफ yarns तैयार होता है, सेट ऑफ थ्रेड्स तैयार होता है, उसको वूफ कहते हैं. इन अदर वर्ड अ फैब्रिक तैयार होता है. ठीक है, तो जैसे बहुत सारी थ्रेड्स मिलके आपस में क्या वीव करती हैं, एक सेट ऑफ यार्न्स वीव करती हैं, एक ब्यूटीफुल पैटर्न वीव करती हैं. ऐसे ही बहुत सारी थॉट्स मिलके एक ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट करती हैं पोएट के माइंड में. ओके, सो ही स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग मैनी मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, and these memories appear to be interwoven together to form a beautiful picture on his mind. Now let us discuss poetic devices in the second stanza. So first we will see there is the use of poetic device onomatopoeia. Onomatopoeia means use of sound words. Okay, in the first stanza also there was a word patter. In this stanza also patter word is there and tinkle. Okay, in the first line the word tinkle and the word patter. Okay, both of these words are example of onomatopoeia. Okay, next example of alliteration in the fourth line busy being. Okay, B consonant in the beginning of two words, alliteration. And the next poetic device is personification in the fifth line. Okay, and a thousand recollections weave their air threads into woof. क्या रिकलेक्शंस कोई काम कर सकती हैं? क्या मेमोरीज कोई काम कर सकती हैं? यहाँ पे बताया गया है दे वीव देयर एयर थ्रेड्स. ओके, सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. हियर रिकलेक्शंस आर मेड टू बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स बाय वीविंग. ओके, नाउ स्टार्टिंग थर्ड स्टांजा. नाउ in memory comes my mother as she used in years agone. Okay, so as soon as the poet is lost in the memories of his earlier life, so the first memory that comes to his mind is his mother. Okay, as he used in years agone. Agone means past years. Okay, जैसे कि वो पहले हुआ करती थी. So now in memory comes my mother. We can see the use of alliteration. Memory, my mother. Okay, M consonant letter in three words starting letter M. As she used in years agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. तो उसके माइंड में क्या मेमोरी आती है?
ओके, रिगार्ड मीन्स टू लुक फॉन्डली, टू ऑब्जर्व फॉन्डली। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे उसके अपने बच्चों के लिए वर्ड ये यूज़ हुआ है। उसके जो चिल्ड्रन है इंक्लूडिंग द पोएट, ठीक है, वो सोने की कोशिश कर रहे हैं, वो ड्रीम्स देखने वाले हैं अब, ठीक है। तो उन बच्चों को जो सोने वाले हैं उनको बड़ी फॉन्डली वो निहार रही है, उनको देख रही है। To regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Dawn means daybreak. क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तक फिर वो सो जाएंगे, फिर उनको देख पाएगी वो नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, तो उससे पहले सोते हुए बच्चों को वो बहुत प्यार से निहार रही है, और वो लुक अभी तक पोएट के माइंड में मेमोरी बन के आती है, ठीक है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो वो अभी तक वो फॉन्ड लुक फील कर सकता है। फील फॉन्ड, एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। सिमिलरली इन द अर्लियर लाइन्स डार्लिंग ड्रीमर्स, एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके, as I list to this refrain, so what is the meaning of list? List means listen. And what is the meaning of refrain? Refrain means the part of song that is repeated. ठीक है, तो जब भी यहाँ पे रिफ्रेन रिपीटिंग साउंड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। जब जब वो पैटरिंग साउंड रेन की सुनता है तो उसको वही चेहरा याद आता है जो कि बड़े फॉन्डली उसकी तरफ देख रहा है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, जब भी मैं सुनता हूँ ये साउंड बारिश की, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जो आवाज़ कब प्रोड्यूस होती है? जब रेन की ड्रॉप्स शिंगल्स पे, टाइल्स पे फॉल करती हैं। तो ये जो पैटरिंग साउंड जब भी पोएट सुनता है तब ही वो हमेशा इस सिचुएशन को अपनी मदर की फॉन्ड लुक से रिलेट करता है। cause it was raining at that time also. So जब भी उसकी रूफ पे बारिश की बूंदों की आवाज़ उसको सुनाई देती है तब वो अपनी मदर को याद करता है। So as the better word has been repeated in all the stanzas of the poem, so this is the example of repetition.